बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस के लगातार जो है वो टेस्ट सॉल्व करते आ रहे हैं और आज दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक और टेस्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए, जो इस वक्त आपके सामने ऑनियर होगा। ऑलरेडी आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 15 अज्जा पर मुश्तमिल होता है और उसके 15 मार्क्स होते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव पेपर भी जो है वो कहा जाता है और उसकी सीक्वेंस क्या होगा, किस चैप्टर में से कितने आएंगे, ये ऑलरेडी आपको कन्वे किया जा चुका है और इसका लेक्चर भी जो है वो चैनल पर मौजूद है। आप वहां से डिटेल सारी जो है वो नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, डिवाइस ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। Question number 2. Sorry. Another name for main memory is secondary memory, permanent memory, primary memory or tape storage. Question number 3. Which of the following is a de facto standard? Which of the following is a de facto standard? ANSI, ISO, SNA, IEEE. Question number 4. Which program is used to connect remote computer to the internet? Which program is used to connect remote computer to the internet? Telnet, FTP, email or www. Question number 5. Which transmission technique can transmit the data over long distance? Which transmission technique can transmit the data over long distance? Baseband, broadband, bandwidth or bit rate. Question number 6. The typical fiber optic cable consists of very narrow strands of glass called. Typical fiber optic cable consists of very narrow strands of glass called core, cladding, base or sheet. Question number 7. A word processor can be used to write text, edit text, print text or all. Question number 8. The order of a stack is FIFO, LIFO, register or RAM. Question number 9. Which of the following is not considered to be a peripheral device? Which of the following is not considered to be a peripheral device? Disk drive, keyboard, monitor or CPU. Question number 10. Software that is available free for a limited period is called. Software that is available free for a limited period is called freeware, groupware, shareware or limitedware. Question number 11. The maximum partitioning that can be created on a basic disk is. The maximum partitioning that can be created on the basic disk is 2, 3,
4 or none of these? Question number 12. The list of documents waiting to be printed on the printer is called. A list of documents waiting to be printed on a printer called print list, print stack, print queue, or print line. Question number 13. The shape of insertion point symbol is. The shape of insertion point symbol is arrow, vertical line, horizontal line, or circle. Question number 14. A formula in Excel always begins with a symbol. A formula in Excel always begins with a symbol greater than, equal to, double equal to, or less than. Then the final question of today's test. The process of launching a web page is called. The process of launching a web page is called web linking, web publishing, web development, web डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट ये आज के 15 सवालात थे. होप सो आपने इनको हल कर लिया होगा. सबसे पहले आप शीट के ऊपर कोने पे अपना नाम, रोल नंबर और आज की डेट लिखें और अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद इसको फोल्डर के अंदर लगा दें. छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका होमवर्क जो है वो सबसे पहला काम यही होगा कि उसको चेक किया जाएगा. तो बढ़ते हैं आज के जवाबात की तरफ. आंसर की. फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर. सेकंड क्वेश्चन करेक्ट आंसर प्राइमरी की, सॉरी प्राइमरी मेमोरी. थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर SNA. SNA. फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट आंसर टेलनेट. Question number 5, correct answer is broadband. Question number 6, correct answer core. Question number 7, correct answer all. Question number 8, correct answer LIFO, last in first out. Question number 9, correct answer CPU. Question number 10, correct answer shareware. Shareware. Question number 11, correct answer 4. Correct answer 4. Question number 12, correct answer print queue. Print queue. Question number 13, correct answer vertical line. Vertical line. Question number 14, correct answer equal to. Correct answer equals to. Question number 15. Final question of today's test, and the correct answer is web publishing. Web publishing. So स्टूडेंट अब आप अपने मार्क्स लिख के तो एक तो अपनी अटेंडेंस लगाएं कमेंट्स में. अगर आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है तो अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट के लिए भी ये हौसला अफजा हो कि सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बल्कि बाकी स्टूडेंट भी जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. अगर आप अपनी लोकेशन भी लिख दें तो ये भी बहुत बेहतर होगा. स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा. फी अमान अल्लाह.